Welcome to the IVM Podcast Network. TFG Fantasy Cricket is an IVM production, and you can also check out their other awesome shows like the Rediscovery Podcast, where Ambika and Hoshner looks back at their travel experience and journey across India. You're listening to TFG Fantasy Cricket. Hey guys, welcome to a new episode of TFG Fantasy Cricket Podcast, and this is one of a kind disclaimer that I'm giving right now. आज विवेक कृष्णन शो पे नहीं है. He is not keeping well, तो वो घर पे है, and he said he is not in a condition to talk. कल रात को उसने कुछ चिकन सुक्का वगैरह खा लिया था जो आज भारी पड़ गया. So we are without Vivek Krishnan today, so I'll be the only one who will be taking you through this India versus Sri Lanka fantasy cricket tips and tricks. Now, before we get into this match, kal ka match between England and New Zealand, it's very difficult to think that Adam Milne and Corey Anderson will pick wickets. I know it wasn't a great day for us. अगर किसी ने हमारा ग्रैंड लीग में ये टीम लेके खेला रहेगा तो he might have won something, but otherwise we do agree that it wasn't the best of the teams. But Saudi ने ending में काफी wickets लिए, and he repaid us with why we picked him. And जिन्होंने केन विलियमसन को कैप्टन या वाइस कैप्टन रखा था उनको डेफिनेटली एक एज मिला टू मूव अहेड द लीडर बोर्ड. बट इफ यू रिकॉल आवर लास्ट पॉडकास्ट, विवेक ने एक बहुत फनी स्टेटमेंट बोला था विद अ गुड इंटेंशन, बट ही सेड कि आज हमने मोइन अली लिया है और वो कुछ भी नहीं करेगा. एंड ही डिड नॉट गेट एनी ओवर टू बॉल. आई मीन, कैन यू इमेजिन, मोइन अली को एक भी ओवर नहीं मिलता. Stating that it was a bad day, but yeah, we look forward. पूरा एक Champions Trophy का tournament है. We have to be positive and go ahead with it. So we look at India versus Sri Lanka. Now I personally don't play India matches क्योंकि वहाँ पे एक biasness आ जाता है. It's very difficult for me to say कि कोई opponent team का player अच्छा करेगा और मैं उसको pick करूँ. So I don't play it, but we have our teams. Okay, we feel India will retain the same 11. What a performance it was against Pakistan. Though Pakistan is a pretty weak team as compared to Sri Lanka. Sri Lanka will have Angelo Matthews back into their team, so उन लोग का वो एक all-rounding slot काफी powerful हो जाता है. But we still feel India is a better team and they'll come out, all guns blazing. At this point of time when we are recording, I don't know if the article will be up by the time the podcast is live. But our team is ready, and I'll just go through, our playing 11. So we start with Dekwela. In the batting category, we have Rohit Sharma, Virat Kohli, Shikhar Dhawan, Upal Taranga. In all-rounders category, we have Mendes, Jadeja, Asela, Gunaratne. And in bowling category, we have Bumrah, Umesh and Bhuvneshwar Kumar. Our captain would be Virat Kohli because, the kind of pitches these guys are making for Champions Trophy, Virat Kohli will just explore, whatever he gets onto the bat. And our vice captain will be Rohit Sharma, जो हम लोग का थोड़ा सा mistake हुआ था in the first match where we didn't pick him and he went on to score 91, 92. Going ahead, ऐसा ही फॉर्मेशन रहना चाहिए सारे टीम्स का to have more Indian players and less of Sri Lankan players. Now, two things you must have noticed and शायद तक आप point out कर रहे हो कि युवराज नहीं है and Malinga नहीं है. So, if you look at Malinga, just one reason के लिए Indians have very good record against Malinga. We play him very well. अगर तुम उसका record against Virat देख लो, against any of the Indians batsmen देख लो, Indian batsmen have always dominated Malinga. रही बात युवराज की. Now, युवराज को अगर हम पिक करते तो लास्ट मैच के परफॉर्मेंस पे पिक करते, बट सबने वो मैच देखी होगी. एंड इफ यू रिकॉल, अगर युवराज बहुत अच्छे फॉर्म में होता है, मोस्ट ऑफ हिज शॉट्स आर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड. अगर उसको आप आंख बंद करके सोचो, युवराज इन अ वेरी डोमिनेटिंग फॉर्म, उसके शॉट्स सामने की तरफ आते हैं. जबकि अगेंस्ट पाकिस्तान, एटलीस्ट आई फेल्ट दैट उसके काफी मिस हिट लग रहे थे, स्लॉग स्वीप्स हो रहे थे. तो we don't know if he will get a chance to perform like that again. He might, but we feel जो हमारा top order है, शिखर, रोहित, विराट कोहली will dominate the batting, at the most. बात रही असेला गुणरत्ने की, he is a champion all-rounder. I mean, अगर आज के तारीख में हम श्रीलंका के
बैटिंग लाइनअप को देखते हैं, असेला is one champion who has to come up the order and bat. So this would be our combination. I know ये काफी monotonous podcast हो रहा है since मेरी आवाज तुम सुन रहे हो, but this would be our combination for India versus Sri Lanka. अगर तुम्हें कुछ भी doubts है, विवेक कृष्णन is available on Twitter. He'll be available, offline to answer all your queries. You can connect us via Twitter at TFG Fantasy 11. You can connect us via Facebook as Fantasy Pandit, and you can listen to our podcast on IndusVox Media, SoundCloud, iTunes, Audioboom, and definitely on YouTube. Subscribe, share, like, and comment. I think this was the shortest of all the podcasts that we have done. But take care, guys. Keep hunting. Bye-bye. एक्सक्यूज मी भैया, एक्सक्यूज मी। बोलिए मैडम। मेन्यू में क्या है? मेन्यू में सीन अनसीन है, पॉडकास्ट है, ऑनकोर्स है, साइरस है, मेड इन इंडिया, रीडिस्कवरी प्रोजेक्ट, एम्पावरिंग सीरीज, सेक्स वैक्स है, IVM लाइक्स है, सिंप्लीफाइड है, कीपिंग इट क्वियर है, थिंग्स एंड डेस्टिनेशंस है, माय नेबर सकरबर्ग है और द फैन गराज है। आपको क्या चाहिए? एक बार रिपीट कर देंगे क्या? रिपीट नहीं करता हम। आप जाओ IVMpodcast.com पे और सुनो ये सब, या फिर डाउनलोड करो उनका ऐप, सब आपकी उंगलियों पे।